development in the regime theory was given by Lacy shock theory, Collard English modification, and Blanche and King modification, Simpsons and Albertson method, SS Kirmani modification. So all these scientists were gave their work or research work to improve the Kennedy's or Lacy's regime theory. However, silt carrying unlined channels are still designed according to Lacy's regime theory. You have to remember that the Lacy regime theory is still being used to design a canal for the unlined channel. So, first of all, what is the Blanche method? Blanche gives separate silt factor for the bed and the sides. So, okay, what the siltation factor he gave differentiate between bed and the side slope. Okay, for the bed siltation factor he gave formula, and for the side silt factor he gave also formula Fs and Fb. So Fs is equal to V cube divided by B, and Fb is equal to V square divided by D. That is further can be expressed in the form of D and C. Now, what is the V? Is the mean velocity in the feet per second. Always remember that the velocity was given by Blanche in feet per second. Mean it's all calculation will be in the FPS system. Okay, so what is the D? D is the depth, mean depth, and smaller d is the diameter of the sediment. Okay, so because this equation is used for the siltation factor for the bed, so that's why d is the of the diameter of the sediment, and c is the sediment concentration in the parts per million. Okay, so what is the value of Fs? He gave a table for the if you want to calculate the value of Fs, that is 0.1, 0.2, and 0.3. If the side slope are slight questionless, then you will use the value of 0.1, and if it is medium, 0.2, and if it's high, then you will use the value of 0.3. Okay, so V is the water kinematic viscosity and average width B is equal to B can be obtained from average width. What is B? What it represent? Average width. Either it is bottom width or top width. Bottom width, I guess. Bottom width, sir. क्या चीज? Bottom width. ये top width नहीं होती. So silt factor involved है, तो फिर silt factor जो bottom से आती है. Definitely. Okay, good. So it will be equal to a siltation factor for the bed and siltation factor for the side multiplied by the discharge. You will get the value of average width, that is B, and average depth will be obtained from given formula. So here also you will observe the too much formulas for the Blanche method, and for the longitudinal slope you will use this one formula. To get the value of longitudinal slope, S naught or bed slope. Okay, now how to estimate the bed silt factor using FB and estimate the silt side factor using FS. FS can be obtained value of 0.1, 0.2, and 0.3 according to the location or citation site of the work where you are going to design the canal. And here are the formulas of B average width, that is B average width, that is bottom width, and the average depth and longitudinal slope, all the formula that you have observed in the last slide. So first of all, assume side slope, that is Z, and calculate value of area into B into D. B is the base width and D is the average mean depth. So from this area you can calculate the velocity if you have given the discharge. So the most important part here is the top width. You can obtain from B plus ZD. Okay. And the bottom width B dash is equal to B minus ZD. Okay. ठीक है, कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम है कि ये कैसे निकालनी है. That is the slope, side slope that you will assume. Okay. From the bottom, if you want to get the value of top width, that is represented with capital B, and it will be equal to bottom width plus side slope plus multiplied by the average depth that is obtained from this one formula.
So and if you want to get the bottom width, then you will have to subtract these two values from the bottom width. Okay, so according to blanche, you have to use these formulas to get the value of bottom or top width. The next one is the Simon and Albertson method. Okay, he also proposed equation. इसमें भी उन्होंने क्या दिए हैं, सर एक equations स्लाइड दिए बैक हैं जाएंगे। जी। यहाँ पे जो एफ बी है, यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू 9.6 अंडर डी। ये स्मॉल डी क्या है? D is the dia of the cell, यहाँ पे लिखा हुआ था बच्चे, ये diameter of the sediment, जो क्योंकि अब आगे जितने भी आएंगे ना, अगर इस चीज को अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें कि हमने कैनेडीज के अंदर जो चीजें पढ़ी हैं या इसमें एलिसिस के अंदर पढ़ी हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ काम करना चाहिए, दैट इज द suspended particles or the siltation factor, that is जब हम आगे इसको पढ़ेंगे, इसको उसने दो इसमें डिवाइड कर दिया, दैट इज बेड सिल्ट एंड द सस्पेंडेड बेड लोड एंड द सस्पेंडेड लोड। ठीक है, तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द वाटर है, ये क्या कर रही है, ये दैट इज क्रिएटिंग टू मच प्रॉब्लम्स। सो जो आगे आप ब्लैंच मेथड पढ़ेंगे या इसके आगे जितने भी रेशनल मेथड पढ़ेंगे, उसके अंदर इसने जो लोड है, सस्पेंडेड लोड है या बेड लोड है, इसको स्टडी किया है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई he observed for the bed silt factor and the side silt factor. So that's why here will be the D represent the diameter of the sediment in inches. Okay. Okay. Yes sir. Okay, next theory is Simon and Albertson method. He also proposed number of equations, and his work was based on the Punjab Sindh and the Imperial Valley of USA. So he provided he according to his study, there are 5 types of the groups. उसने 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैनाल बेड एंड बैंक्स। ठीक है, बैंक्स और बेड के हिसाब से उसने सॉरी कैनाल्स और बेड को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उसकी क्लासिफिकेशन कर दिया है। नंबर 1 इज अ सैंड बेड एंड बैंक्स। ठीक है, सैंड बेड होगा और उसकी बैंक्स भी सैंड होगी। नेक्स्ट वन इज द सैंड बेड एंड द कोहेसिव बैंक्स। ओके, third one is the cohesive bed and the banks. Fourth one is the coarse non-cohesive material. Fifth one is the same as top two, but with heavy sediment load 2000 to 8000 ppm. Mean in this sand bed and the cohesive banks, he also included some next part, that is the concentration of the particles, that is in the form of suspended from 2000 to 8000. If you remember that Lacey observe less than 100 particles are suspended particles. So in the Simon and Albertson method, he used the sediment load having 2000 to 8000 parts per million. So he divided the he makes the classifications of the canal and the banks in 5 groups. So in FPS system, Simmons and Albertson use these one formulas to get the wetted perimeter, average width, top width, etc. So first of all, wetted perimeter is equal to K1 Q raised to power 0.5. What is K1? Here is the table when you are going to using Simon Albertson coefficients, that is K1, K2, K3, K4, M, and for the type of the channel, at if it is one, let's say type is 1, then you will use K1 value 3.5 and K2 0.52. These 1, 2, 3, 4, 5 are the classifications. 1, 2, 3, 4, 5 are the classifications of the canal and the banks, and from this table you can get the value of K1, K2, and K4 up to K4. Okay, so when you want to get the wetted perimeter, P is equal to K1 Q raised to power 0.5. You have the value of Q and K1 is constant. According to your table, you can easily calculate the value of wetted perimeter. So average width, that is B, is equal to 0.9 times of P according to Simon and Albertson. Okay, surface width is equal to B plus 2 divided by 0.92.
Okay, what is B? B will came from this equation, and B is obtained from this, P is obtained from this one. Okay, so these are interlinked with each other. Each step is can be achieved from the, if you have the value of previous step. Okay, so hydraulic radius according to this method can be achieved from this equation, that is K2 Q raised to power 0.36. You can obtain the value of Q2 from this table and put the value in this, and you will get the value of hydraulic radius. Okay. Similarly, average depth of the channel, that is D, and can be obtained if the value of R, hydraulic radius, is less, if the value of R is equal to 7, then you will use this one, and if greater than 7, you will use this one. Okay. So these are the limitations to get the value of D. Similarly, for the velocity K3 R square S raised to power n, and these all formulas will be used. I think there is no numerical. Anyhow, you have to know about these equations and the formulas, that how can we calculate the value of velocity and Chase's coefficient, etc. Okay. So at the end, he said that S should be equal to K for V divided by V raised to power 0.37 into G into D. If you have the value of all these variables, then you can calculate. You can put these values in this equation to get the value of slope S. ठीक है, ये कैलकुलेशन के लिए उसने उसके फार्मूलाज हैं, ये उस पे डिपेंड है कि वो हमें कौन सी वैल्यूज देता है, और हम उस अकॉर्डिंगली उन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे. जस्ट लाइक इन कैंडिस थ्योरम, जो उसके प्रॉब्लम्स थे, उसमें किसी पॉइंट के ऊपर उसने स्लोप दे दिया, देन यू विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ. नाउ हियर ही गेव द वैल्यू ऑफ डी, देन you can calculate from f, and here there is no value of d15, then you will have to calculate the value of d50. So when you have the formulas, then you can calculate the value of different variables using either table of fs and from the this formulas from the given table. Okay. Yes, sir. Formulas हैं इसमें. The purpose behind these theories, what do you think that why we are studying about the previous studies of these designs? Why we are studying? What is the purpose? अब इतनी डिस्कशन कर लिए, थोड़ा सा इसमें इसका पढ़ने का पर्पस तो बताना कि हम ये इतना थ्योरेटिकल पार्ट, इतने फार्मूलेस क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? सर मे बी मॉडर्न मेथड्स को समझने के लिए बेस लाजमी होती है, तो बेस बना रहे हैं. बेस लाजमी है, मीन के हम चले जो करंटली जो मेथड भी यूज हो रहे हैं हम उनको स्टडी नहीं करें. जो हमने ऑलरेडी जितने भी कैंडिडेट्स पढ़े हैं या ये सारे सिमल वगैरह पढ़ रहे हैं, तो इससे आपने क्या मतलब अचीव किया है? आपको क्या इसका क्या फायदा हासिल हुआ है? तो डिफरेंट पैरामीटर्स पता चले हैं कैनाल डिजाइन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर फॉर्मूलाज में यूज हो रहे हैं. डेफिनेटली डिफरेंट बेसिक पैरामीटर्स. एंड और क्या हो सकता है? बोले शाबाश, थोड़ी डिस्कशन करें बच्चे, सिर्फ लेक्चर सुनना नहीं होता, थोड़ी उसमें पार्टिसिपेट करें कि ये चीजें हमने यहाँ तक इतनी डिस्कशन क्यों की है, इसका क्या पर्पस है कि हमने इतनी पुरानी 1935 1895 in Kennedy's, 1930 in Lacy's, and now we are still studying about 1919 and other. Why we are studying about these previous old studies? सर डिफरेंट कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए कि फील्ड में जाएंगे तो फिर क्योंकि कैनाल्स हैं, कहीं पे एडसन कैनाल्स होंगे, कहीं पे कंक्रीट कैनाल्स होंगे, तो फिर उसके लिहाज से में सबके बारे में पता होना चाहिए. कंडीशंस की आप मुझे समझ नहीं है कि कंडीशन, व्हाट डू यू मीन अबाउट द वर्ड कंडीशन? सर हो सकता है कहीं पे बेड सैंड की हो, कहीं पे कोहेसिव सोइल से बेड में नहीं हो, कहीं पे नॉन कोहेसिव सोइल से बेड में नहीं हो, स्लोप्स डिफरेंट हो सकती हैं. तो फिर हमें हर कंडीशन के मुताबिक हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि which formula is going to be used there, which will be the best fitted formula there. So it means you are saying that we can say these formulas if you have the knowledge about its bed, its side slopes, either it is sandy or
any other type of, then you can use these formulas. Yes. But we are also at the end of each method, that either it was candies, either it was laces, about deficiencies. What do you think about that deficiencies? कि हमें उनका पता भी है कि this method have some limitations or deficiencies. Then how can you apply that method when you are going to design a canal or any channel for that specific? सर हम ऐसे कर सकते हैं कि मुख्तलिफ एक अगर हमने बेड मतलब चैनल डिज़ाइन करना है तो फिर हम चेक कर Good, सकते हैं good. कि कौन सा फार्मूला बेस्ट वहाँ पे फिट कर रहा है मतलब डेफिशिएंसीज तो हर फार्मूले के अंदर है लेकिन even you have no even you are well known about its deficiencies, then you are going to apply that formulas. सर चेक करेंगे ना कौन सा फार्मूला वहाँ पे सबसे अच्छा लग रहा है तो आप बेस्ट फिट कर फॉर रहा है एग्जांपल डेफिशिएंसीज आपकी, को देख के ओके ओके, so good, very good. If I say that make a canal in Sindh, then what you say that what is your method that you will apply on that area? सर जो सिंध की जो हमने वहाँ पे कैनाल बनाना है सर उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी सोइल की पहले उसको देखना पड़ेगा सोइल कौन सी है जहाँ तक मतलब जो हमने सैंड है मेथड पढ़े हैं, इनमें से आप कौन सा अप्लाई करेंगे? जितने भी हमने मेथड पढ़े हैं, कैनेडीज हो गया, लेसी हो गया, या सिमन अल्बर्टसन मेथड हो गया, या इससे पहले जितने भी हमने पढ़े हैं थ्योरीज की, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनेडीज और लेसीज हैं, जो लेसीज तो अभी भी यूज हो रही है। एंड व्हाट इज योर प्रायोरिटी? सर जो हमने रिसेंटली पढ़ा उसको यूज़ कर सकते हैं यस डेफिनेटली, देयर इज अ चेन। ओके, कुछ और बच्चे भी बोल रहे हैं, बच्चे सिर्फ एक बच्चा डिस्कशन कर रहा है। यू आर आल्सो द पार्टिसिपेंट ऑफ दिस क्लास। What you have learned from today's lecture or the previous lecture? What you have learned? उसामा आमिर, अभी उसामा बोल रहे थे? जी सर Okay, Umar Farooq, what do you have learned about today's and previous lecture? Umar Farooq. Civil 16, have you any question or make a discussion? तो वही बेसिक वही बात थी कि डिफरेंट पैरामीटर्स हमने स्टडी किए हैं जो कि इफेक्ट करते हैं कैनाल डिज़ाइन को, क्योंकि मेथड जितने मर्जी मॉडर्न हो जाए उनकी बेस या जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही होती हैं। उनमें से मॉडिफिकेशन आती है विद टाइम, मे बी एक पैरामीटर्स को एडिशन हो सकती है बट सब्ट्रैक्शन मुश्किल है। गुड, ठीक है। तो इसलिए लाजमी होता है कि आप ये मेथड स्टडी करें। तो मीन के आपने आज की क्लास के अंदर मतलब कि इसको अगर हम इसकी समरी दें कि व्हाट यू हैव लर्न, देन व्हाट यू से दैट आई हैव लर्न दीज थिंग्स, क्या आपने क्या चीज सीखी है इसके? सर कैनाल डिज़ाइन बेसिकली, अगर आपने कैनाल डिज़ाइन करनी है उसकी वेट तो उसकी ज्योमेट्रिक क्रॉस सेक्शन, तो उसके लिए 4-5 फॉर्मूलाज हैं बेसिक। ओके, सो which is the method you consider that it is more accurate as compared to other? So which method is more accurate in today's lecture? तो मेरे ख्याल से जो लेटेस्ट मेथड आपका इसका नाम फिलहाल लेटेस्ट कौन सा लास्ट था? मेथड होगा वो तो अल्टीमेटली डेफिनेटली जो हम उसमें कैंडीज पढ़ेंगे, पहले कैंडीज पढ़ा था, लास्ट बार कैंडीज से अच्छा लेसी है, लेसी से अच्छा फिर जो लेटेस्ट पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली दैट विल बी latest is the more accurate method because he consider the siltation factor, its charge in the water. So definitely it's latest method, and it study and it resolve the deficiencies of other candies or laces theory, definitely. Sir, and the Okay, most good. important thing is that the recently used formula is derived from the experiments that are done in Pakistan, in the Punjab and Sindh. Okay, but in the previous, I think पंजाब एंड सिंध इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है आपकी बात, लेकिन ये है कि मेथड शुड बी जनरल, नॉट स्पेसिफिक एरिया। ओके, फॉर द नॉट स्पेसिफिक एरिया, ये जनरल होना चाहिए कि आप उस मेथड को जस्ट लाइक एसआई
यूनिट्स जो हैं वो हम जहां पे भी इस्तेमाल करें होल वर्ल्ड, यू कैन यूज दैट units, okay, because it's general. So we have to give importance that method that should be applicable for all type of the canals, all type of the areas, okay. So it's not important कि अगर उसकी जो study है for the Punjab or for the Sindh or for Pakistan, then we have to make it clear or good कि ये क्योंकि पाकिस्तान के लिए, that's why we are assuming it's well and good. No, सर लेकिन it's इतनी general. रिसर्च हुई है तो फिर आपके मुताबिक कौन सा मेथड सबसे बेस्ट फिट है जो कि हर कंडीशन में यूज हो सकता है? मेथड यूज अभी तक देखे ना, कोई भी चीज, गुड क्वेश्चन, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, ठीक है ना। इवन स्टिल जो अब हमने लेसी रिजिम थ्योरी पढ़ी है फॉर अनलाइन कैनाल्स, इट इज बीइंग स्टिल यूज्ड, अभी तक यूज हो रही है। लेकिन इवन वी हैव स्टडीड अबाउट ड्रॉबैक्स, कि हमने इसके ड्रॉबैक्स के अंदर पढ़ा हुआ है ना यहाँ पे कि इतने प्रॉब्लम होने के बावजूद में पता भी है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देन स्टिल वी आर गोइंग टू यूज, बिकॉज जो पाकिस्तान के अंदर भी ये मसला हो रहा है कि हम हर जगह पे लाइन कैनाल्स, वी कैन नॉट प्रोवाइड द लाइन कैनाल्स एट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। एनी हो, हमारा जो मैक्सिमम मैशत है डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर, एंड इसमें बहुत सारी कैनाल्स हैं, नंबर ऑफ कैनाल्स हैं, देन मैक्सिमम कैनाल्स आर अनलाइन कैनाल्स, एंड वी आर स्टिल यूजिंग लेसीज रिजीम थ्योरी, ओके। So definitely it depends upon area to area, और still इसमें different theories यूज हो रही हैं। हम ये नहीं कह सकते इसके अंदर कि भाई फॉर एग्जांपल ए बी सी थ्योरी में से कोई एक थ्योरी है जो ओवर द होल वर्ल्ड बीइंग यूज्ड, ओके। तो उसमें डेफिनेटली डिपेंड करता है टाइप ऑफ द सेल, डिपेंड करता है डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी, डिपेंड करता है इट इज लाइन एंड अनलाइन, सो डिफरेंट फैक्टर्स। सो जब ये थ्योरी आप, मेरा क्वेश्चन भी यही था आपसे कि हम ये क्यों पढ़े, इसलिए था कि अगर तो आपके पास जो जहाँ पे भी आप डिजाइन करते हैं, देयर आर मेनी फैक्टर्स के, आपके पास बजट कितना है या आप इसको कहाँ से ले जा सकते हैं, सो इट डिपेंड्स अपॉन दैट फैक्टर्स, दैट एरिया। अगर तो आप लेसी यूज कर सकते हैं, वेल एंड गुड, आप वहां पे यूज करें, बट फॉर लाइन कैनाल्स यू हैव टू यूज अदर मेथड बट नॉट लेसी रिजीम थ्योरी। तो इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, कोई हम एक को नहीं कह सकते दैट इज द परफेक्ट मेथड। स्टिल इसके ऊपर भी रिसर्च हो रही है कि हम कैसे जो पाइपिंग रिएक्शन है या जो सिल्टेशन स्कावरिंग फैक्टर है, स्टिल इज द प्रॉब्लम फॉर द डिजाइनर्स। सर अब कैनाल डिजाइन के लिए जो कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी बने हुए हैं सर, वो किसकी बेस पे बने हुए हैं, कौन सी थ्योरी की बेस पे सॉफ्टवेयर्स? यही बता रहा हूँ ना बच्चे कि इसमें देखे ना, सॉफ्टवेयर होती है, न्यूमेरिकल सिमुलेशंस होती हैं, इसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। पर्पस भी यही है कि जैसे ये इनके मेथड थे ना, जैसे ये कैंडीज हो गई या दूसरे हो गए, वो पहले एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट। और दूसरा है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकली मीन जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज न्यूमेरिकल मेथड, एंड जो एक्सपेरिमेंटली हम यूज करते हैं, जो हम फील्ड के अंदर फिजिकली परफॉर्म करते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंटल। सो एक्सपेरिमेंटल के अंदर जितने भी पुराने थे रिसर्चर्स, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली चीजें कैलकुलेट की हैं, और उसमें दैट इज टू मच टाइम कंज्यूमिंग, ओके। वो इतने ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग कि वी कैन नॉट, और इसमें एक्यूरेसी भी इतनी नहीं है, क्योंकि इट देयर मे बी सम एरर्स, ह्यूमन एरर, और फील्ड के अंदर जितने भी ड्यूरिंग कैलकुलेशन एरर, डिफरेंट एरर्स आ सकते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट परफेक्ट मेथड इज द न्यूमेरिकल मेथड, जिसमें हम सॉफ्टवेयर के जरिए उस पूरे कैनाल को डिजाइन करते हैं कि कौन सी स्लोप देनी चाहिए। यही जो मेथड, यही जो फैक्टर्स हैं, इन्हीं को हम कंसीडर करते हुए हम डिजाइन करते हैं। अगेन वही बात आ जाती है कि कौन सा, जैसे आपका क्वेश्चन है कि कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें यही, फिर मेरा भी यही जवाब है कि इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द कैनाल, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द सॉइल। इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं कि जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल अनलाइन कैनाल यूज कर रहे हैं, उसको डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स और क्राइटेरिया होगा। फॉर लाइन कैनाल उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होगा। जब आप सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो you will get the accurate and exact values of side slopes, bed slope, top width, bottom width, to get the minimum siltation and scouring factors, okay. So it's depends upon the location where you are going to design,
ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, जो बेसिक इनके होते हैं ना डायमेंशंस यही होते हैं कि वेटेड पेरीमीटर, हाइड्रोलिक रेडियस, वेलोसिटी, इनको तो हम नहीं चेंज कर सकते। इट्स डिपेंड्स कि हमें कहाँ पे कितना डिस्चार्ज चाहिए, या फिर उसको लाइन है अनलाइन है, वहाँ पे जो सॉइल है वो किस टाइप की है, तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट एरिया। जी क्वेश्चन। सर एज वी नो फॉर स्ट्रक्चर डिज़ाइन, यस, उसमें हम जो भी सॉफ्टवेयर्स पढ़ते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर दे यूज़ FEM एनालिसिस मेथड, राइट? ओके। So in the similar way, there must be some common method that is mostly used for irrigation engineering softwares. You know, software never comes from nowhere. उसकी कोई ना कोई बेसिस होती हैं, कोई रिसर्च पिछली होती है, कोई थ्योरी, कुछ ना कुछ बेसिस ज़रूर होती है। तो we didn't get the answer for that. कि नॉर्मली कौन सी थ्योरी इनमें से या कौन सा मेथड ज़्यादा यूज़ होता है सॉफ्टवेयर्स में, ताकि हमें ये पता चल सके कि लेट्स सपोज कल को हम फील्ड में जाते हैं तो वी मस्ट नो कि दिस इज़ द मेथड दैट गिव्स द एक्यूरेट आंसर्स, दैट गिव्स द आंसर्स क्लोजर टू रियलिटी. Okay, so you can use different software. Have you used ANSYS? ANSYS Fluent? No, we never used any software for irrigation engineering design. Irrigation engineering, if you are going to, for example, if you are going to design a channel, for example, then you can use ANSYS. You can use हैक्रॉस। हैक्रॉस के अंदर भी हमने एक डिजाइन किया था पूरे कैनाल को, उसमें उसकी स्लोप भी दे सकते हैं, मैंने कोएफिशिएंट भी दे सकते हैं, उसके डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। यू कैन डिजाइन होल channel. Okay, you can insert bridge in that हैक्रॉस using हैक्रॉस। ठीक है। Even I have used ANSYS Fluent. यहाँ मेरा इंस्टॉल भी वो खड़ा यहाँ पे ये वाला, that is ANSYS. So you can use ANSYS to get the value of different part and different cross sections, that the how much amount of water you want to get at what you gave the value of inlet and what you want to get the value of outlet. Okay, so you can give different conditions to observe or calculate or investigate the for line canals. Okay, line canals, definitely you can make models on ANSYS for the line, but for unlined canals I don't think so कि उसमें मेरे ज़हन में कोई unlined canals के लिए नहीं आ रहा. You can use ANSYS for line canals. You can observe different values of either at the top, at the bottom, and different variables, that is turbulence characteristics, that is velocity, each and every variables. That is just like you can observe, you can make design of its side slopes, bed slopes, mean longitudinal slope, and top width. So you can design on ANSYS, and on HECROS you can also make design on the HECROS. Okay. All right, sir. From your answer, whatever I have got is actually how and what are the things that the software deals with. I didn't get the answer yet. That what is the approach out of these theories that the software utilizes? That was my question. Okay, which are the approaches that or which are the bases that software being used? In case Yeah, out software of के these, whatever we have back studied पे so कौन? far. Yes, okay, got your question. So valid question, well and good, because we should move and get right from the experimental procedure. We should go toward the numerical procedure, numerical work, and in next class इसमें थोड़ा सा इसको मैं खुद भी देखता हूँ कि what are the basics about which why we use the softwares, and about your question. So good question. तो also इंशाल्लाह इसको next class के अंदर देख लेंगे. ठीक है. At this time I don't have any idea about your question. ठीक है. Okay, sir, no problem. ठीक है. So there are the rational methods.
there are almost 4 rational methods that are being used to improve further calculations and design of the canal. That is the that include bed and suspended load, and the methods are formulas are Dobbe's formula, Einstein's bed load formula, Einstein-Brown formula, and Weir-Peters formula. So these formulas included the sediment load are divided the sediment load in two forms, either it is the bed load and the suspended load. Okay. So this is the general view that will be studied in detail about these methods in the next class. So I will give you a little bit touch about what are the rational methods and which are the rational methods. That is, these are the 4 rational methods, and why we use these methods, because it divides the sediment load in 2 parts, that is either bed load or the suspended load. Because separate functions have been derived by various authors for both, these functions are empirical in nature, being based on laboratory experiment and the field data. So these data can be achieved from the field and the laboratory experiment. You can also obtain from the laboratory experiment when you perform experiments in the channels provided in the hydraulics lab. So today is the end of the lecture, and next class will be start from this method and bed लोड फंक्शन डेवियस फार्मूला के इसके अंदर कौन से फार्मूलाज हैं, तो ये सारे आगे जो जितने भी फार्मूलाज हैं that will be studied in the next class. If you have any questions till today's lecture, then you may ask, and otherwise see you in next class inshallah. कोई क्वेश्चन है बच्चे इसके अंदर? नहीं तो फिर इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर कैरी करेंगे, जो हमारे मेथड्स हैं. No question. No, sir. Thank you. ओके. उमर फारूक उस वक्त नहीं थे आप क्लास के अंदर हैं? उमर फारूक? Yes, sir, I'm here. तो आपने क्वेश्चन का उस वक्त जवाब क्यों नहीं दिया जब मैंने क्वेश्चन किया था आपसे? उस वक्त कर नहीं था मैं. अगर कोई क्वेश्चन क्या आपने चीज? मुझसे पूछा, अगर कोई क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, आई वाज नॉट देयर. यू वर नॉट देयर. इंटरनेट मेरा काफ़ी वीक है हॉस्टल में, तो दैट इज वाई. जब क्वेश्चन किया उस वक्त इंटरनेट वीक हो गया, या जब अभी क्लास के एंड पे इंटरनेट ठीक हो गया? सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि मैंने आपका कोई क्वेश्चन नहीं सुना अगर आपने मुझसे पूछा है. अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि मैंने आपको उस वक्त बुलाया था कि आप कह रहे हैं कि मेरा उस वक्त नेट खराब हो गया था, या जो भी? मैंने ये तो नहीं कहा सर, मैंने ये कहा है कि नेट मेरा वीक है और बार बार आवाज़ कट रही है. मैंने आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं सुना जिससे आपने मुझे बुलाया. ओके. सो प्लीज टेक पार्ट इन द डिस्कशन पार्ट. उसमें थोड़ा सा देख लीजिए करें बच्चे. जैसे अभी एक क्वेश्चन वेल एंड गुड क्वेश्चन कि न्यूमेरिकली उसको हम कैसे कर सकते हैं, ऑन व्हाट बेसिस. तो वेरी गुड क्वेश्चन. इसमें क्लास का पर्पस भी यही होता है कि एक दूसरे से चीजें सीखने की, ठीक है ना? तो टुडे आई हैव लर्न फ्रॉम यू, ठीक है? टुडे आई हैव लर्न फ्रॉम यू कि ये और कैसे सीखे है कि ड्यूरिंग डिस्कशन, अगर सिर्फ मैं आपको पढ़ाता जाऊं, उसमें सिर्फ एक ही बंदा बोलता जाए तो कोई फायदा नहीं होता सीखने का. जब डिस्कशन होती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू हैव लर्न फ्रॉम ईच अदर. सो एनीहो, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, एंड सी यू नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह. जी जी. एक और चीज़ थी कि ये जो मेथड्स हैं ना, जितने भी हम पढ़ रहे हैं जी, एक जगह पे आपने मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा था. आई ट्राइड टू रिप्लाई. मैंने अपना माइक अनम्यूट भी किया, बट आई डोंट नो. जी क्वेश्चन दोबारा बोलिएगा आप. Someone just removed me from the meeting. ओके. अच्छा, शर्म कर लें. अगर आप क्लास के अंदर खुद पार्टिसिपेट नहीं करते तो दूसरों को तो डिस्टर्ब ना करें. अब बच्चे नहीं है आप, फाइनल सेमेस्टर आपका, ये फजूल हरकत करने को कोई तो बनता है? At some point I tried to answer one of the questions that you asked from the whole class कि ये जो methods हम सारे पढ़ते हैं
तब मैं माइक अनम्यूट भी करता रहा, आई डोंट नो क्या इंटरनेट का इशू था, बार बार आवाज़ कटनी स्टार्ट हो जाती है अंदर से। हॉस्टलाइट सबको आप पूछ सकते हैं कि अभी भी मेरे इधर सिस्टम पे दिखा रहा है बैड नेटवर्क क्वालिटी। ओके, इट्स ओके। तो एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि जो मेथड्स हम जितने भी पढ़ते हैं इनकी क्या रीज़न है, क्या बेसिस है, हम क्यों पढ़ते हैं। यस सर बेसिकली मेरा जी ये ख्याल है कि हम जितनी भी आगे से आगे रिसर्च करते हैं ये लिंक्ड होती है पीछे से, कि हम लेट सपोज कोई भी थीसिस उठाएं, कोई भी आप जर्नल का आर्टिकल या किसी कॉन्फ्रेंस का आर्टिकल उठाएं, तो वो हमेशा कहीं ना कहीं से रेफरेंस्ड होता है। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि वी आर नॉट लाइक आइंस्टाइन के हम एक पेपर लिख दें जिसके अंदर कोई भी रेफरेंस ना हो। हमें चीज़ें पीछे से लिंक करके चलनी पड़ती हैं। तो दैट इज़ द मेन पर्पज़ कि हमें ये सारा पीछे पता हो कि अच्छा ये फलां फैक्टर अगर यूज़ हो रहा है तो उसकी बेसिस क्या थी, वो आया कहाँ से, किसने प्रपोज किया था, क्यों किया था, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस। सो दीज आर द बेसिस, आई थिंक सो। मीन डेफिनेटली मीन के देयर इज अ चैन। ओके, तो जहां पे अब हम बैठे हुए हैं, जितनी भी अब तक रिसर्च हो चुकी है, दे हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस रिसर्चर्स। ठीक है, प्रीवियस रिसर्चर्स की कंट्रीब्यूशन विल रिमेन ऑलवेज। हम जब तक हमारी ये रिसर्च चलती रहेगी, हमने सीखना कहाँ से है, कहाँ से हमें चीजें का पता चलेगा, यही इन्हीं चीजों से पता चलेगा जिन्होंने प्रीवियस रिसर्चर्स ने ये काम किया हुआ है। उन्होंने चीजें हमें बताई हुई हैं कि अगर आप ये काम करेंगे तो यू विल फेस दीज प्रॉब्लम्स। ओके, तो इट इज लाइक अ चैन, ये चैन आगे जा रही है और पीछे वालों से कुछ सीख रही है। डेफिनेटली आपने जो चीज यहाँ पे रेफरेंस यूज किया है एज अ, कि हम जो भी रिसर्च आर्टिकल होता है, जर्नल पेपर होता है या अदर कॉन्फ्रेंस पेपर, तो दैट इज बेस्ड ऑन द बेस्ड सम रेफरेंसेस। के कोई भी काम कर रहा होता है कि वो ये नहीं होता आइंस्टाइन की कि वो खुद से हर चीज बता दे और उसको हर कोई एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्टेबल भी उस वक्त है जब he used some deficiencies of the previous work। ठीक है ना, वो प्रीवियस वर्क में से कुछ डेफिशिएंसी। रिसर्च वर्क का बेसिक पर्पस भी यही होता है, या उसका बेसिक रूल भी यही है कि जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, जब आप कोई चीज नई आप किसी को बताते हैं, तो आप करते यही है कि प्रीवियस वर्क में से डेफिशिएंसीज निकालते हैं कि प्रीवियस वर्क में ये काम हुआ था बट इट हैज सम डेफिशिएंसीज, and I'm recovering that points which he missed during his work। okay, तो during your research work आप उसी चीज को लिंक करते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स बताते हैं कि इसने जो काम किया है। अब जो हमने कैंडीज पढ़ा या लेसीज रिजीम थ्योरी पढ़ा, इसकी जो डेफिशिएंसीज हैं वो कैंडीज ने नहीं बताई, वो लेसीज ने नहीं बताई, बल्कि जो नेक्स्ट रिसर्चर्स हैं उन्होंने बताया कि कैंडीज के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, देन यू हैव टू सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम। सिमिलरली फॉर लेसीज रिजीम थ्योरी, उन्होंने नहीं खुद बताया, बल्कि जो फ्यूचर रिसर्चर्स हैं, दे टोल्ड दैट देयर आर सम प्रॉब्लम्स when you are going to use either Kennedy's or Lacey's regime theory. So the basic purpose of this that you have to learn from the previous researchers that what they have got for you, what they have concluded from their research work, what they have concluded from their life। कि जो रिसर्चर्स होता है वो अपनी लाइफ लगा देता है इसी काम के अंदर कि कुछ ना कुछ वो अपनी लाइफ में कुछ काम अच्छा कर जाए, एंड दैट पार्ट इज देयर रिसर्च वर्क। ओके, राइट सर, you're absolutely right. okay, so okay, best of luck, see you next class inshallah। Allah Hafiz। Okay sir, Allah Hafiz। Allah Hafiz, sir। Allah